हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर नॉलेज सांग मैंने देखमा पूर्ववर्ती क्लास रे हमें केतरा क्वेश्चन करथिले। सो आज आउ केतरा क्वेश्चन करमा। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। इट इज ए if a computer has more one processor then it is known as what। तो देखो सांग मैंने ऑप्शन नंबर 1 रे देचे मल्टी प्रोग्रामिंग, बी रे देचे मल्टी प्रोसेसर, सी रे देचे मल्टी थ्रेडेड, देन डी रे देचे यूनि प्रोसेसर। सो सांग मैंने हमर क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, देन जेंटा कि होची मल्टी प्रोसेसर। क्वेश्चन आर्थर पढ़ी दउचे देखो। If a computer has more than one processor then it is known as multiprocessor। माने जेतरा क्वेश्चन ला इजीली बुझी परथबो। Then second question jiba, malicious software is known as dash। malicious software is known as dash badware, malware, illegal ware, then malicious ware। केनटा हबा एडा हला malware, ऑप्शन नंबर बी। देन 15 नंबर क्वेश्चन के जवान व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। माने जिने जहाँ देन ऑप्शन मान दीजिए से भीतर केनटा हमर इनपुट डिवाइस नुहे सेरा कहू जे देखो। ऑप्शन नंबर ए रे देचे कीबोर्ड, बी रे देचे वीडियो, सी रे देचे माउस, डी रे देचे लाइट पेन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस माने ई भीतर केनटा हमर इनपुट डिवाइस नुहे सेरा इजी क्वेश्चन है। तो देखो हमर वीडियो जेना कि वर्चुअल डिस्क यूनिट हम जेटा इनपुट डिवाइस नुहे। देन देखो 16 नंबर क्वेश्चन ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। माने भीतर हमर केनटा प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर, हमर प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर केनटा। ऑप्शन नंबर ए देचे मदरबोर्ड, बी देचे ग्राफिक कार्ड, सी देचे सीपीयू, देन डी देचे मेमोरी। सो हमर इटा का बोलचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। हमर कंप्यूटर रे केन यूनिट ता फॉलोइंग प्रोसेसिंग करसी। हमर कंप्यूटर रे केन यूनिट प्रोसेसिंग करसी जेंटा कि होजे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन 17 नंबर क्वेश्चन ला देखो, बीट स्टैंड्स फॉर। बहुत इजी क्वेश्चन है। बीट स्टैंड्स फॉर ए ऑप्शन नंबर ए दीजिए बाइनरी डिजिट्स, बी दीजिए बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ टर्म, सी दीजिए बाइनरी ट्री, डी दीजिए बिवैरिएट थ्योरी। सो इन सांग माने काना हबा बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर जेंटा कि होजे बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स होजे हमर बीट ट्रांसफर। देन देखो 18 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। हमर फादर ऑफ कंप्यूटर किए इटा तो समस्त जाने चार्ल्स बेबेज। देन 19 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू। बोले केन कंपनी रो ना निकनेम टा होजे बिग ब्लू। देखो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट, बी दीजिए टीसीएस, सी दीजिए वाइप्रो, देन डी दीजिए आईबीएम। हमर इजीली हमर इरा केते जानथे माने इरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो व्हिच कंपनी इज निकनेम्ड बिग ब्लू। मने रखता ऑप्शन नंबर डी जेटा कि होचे आईबीएम। आईबीएम कंपनी रो निकनेम टा होचे बिग ब्लू। देन 20 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमर केन कंपोनेंट टा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन रे देखो ऑप्शन नंबर ए रे देखो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी रे देचे कंट्रोल यूनिट, सी रे देचे मेमोरी, डी रे देचे ऑल ऑफ द अबव। व्हाट कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जेटा कि कहचे इटा हमर सबु माने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी रे भी यूज हेसी हमर सबुडा माने इटा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हबा। Then the question number 1, an area of the computer that temporarily hold data waiting to be processed dash it। ऑप्शन नंबर ए दीजिए सीपीयू, बी दीजिए स्टोरेज, सी दीजिए मेमोरी, डी दीजिए फाइल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मेमोरी। क्वेश्चन आर्थर बुझी दियो, आर्थर पढ़ी दउचे। एन एरिया ऑफ द कंप्यूटर दैट टेम्पोरारीली होल्ड डाटा। हमर जेंते एरिया रे कंप्यूटर रो टेम्पोरारी जेन डाटा होल्ड के दिसी वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इट दैस इज मेमोरी हबा। देन द क्वेश्चन नंबर 2, डाटा बिकम्स डैश व्हेन इट इज presented in a format that people can understand and use। our data becomes आर्थर क्वेश्चन पढ़े डाटा बिकम्स डैश व्हेन present in a format people can be understand and use। so हमर टिके सॉरी मिस्टेक गला। देन देखो आर्थर क्वेश्चन पढ़ी दउचे, डाटा बिकम डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। तो इन्हें ऑप्शन नंबर फर्स्ट का दीजिए इन्फॉर्मेशन, बी रे दीजिए ग्राफ, सी रे दीजिए प्रोसीड एंड डी रे दीजिए प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन नंबर दीजिए इन्फॉर्मेशन जेंटा कि राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए डैश इज ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हमर
ए डैश इज ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस हमर केन डिवाइसटा माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटिंग इसी देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दीजिए मेन फ्रेम बी दीजिए वर्क स्टेशन देखो सी रे दीजिए सर्वर एंड डी रे दीजिए पर्सनल कंप्यूटर सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देखो आर्थ क्वेश्चन पढ़े दीजिए ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस डी इज राइट आंसर पर्सनल कंप्यूटर देन देखो 3 नंबर क्वेश्चन टा रैम कैन बी ट्रीटेड एज द डेस्क फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर कहाँ हवा एटा फर्स्ट ऑप्शन रे दीजिए ऑपरेटिंग सेकंड ऑप्शन रे दीजिए वेटिंग रूम सी रे दीजिए फैक्ट्री एंड डी रे दीजिए प्लानिंग रूम सो मैंने कहाँ बा देखो आर थोड़े क्वेश्चन आमर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जेनटा कि वेटिंग रूम कहाँ क्वेश्चन बुझ RAM can be treated as the waiting room for the computer processor. Then the fifth answer, fifth question. Which of the following are the function of the operating system? ये भितरु हमर केनटा जे function of the operating system. Then देखो first option माने A option टा दीजिए manages disks and files, B option दीजिए monitors activity, then C दीजिए allocates resources and D दीजिए all of this above. So सांग माने हमर फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम एटा सबजाक यूज सबजाक देखो केन सबजाक माने केन केनटा मैनेजेस डिस्क एंड फाइल्स मॉनिटर एक्टिविटीज इन एलोकेटेड रिसोर्सेस ऑल ऑफ दिस अबाउट ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम देन सर हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन टा देखो टू move a copy of file from one computer to another over a combination channels is called kana file transfer, then file copying, then file modification, then file encryption. So can कहा जाने to move a copy file from one computer to another over combination channel is called माने गोटे फाइल जदि आम गोटे आ गोटे फाइल के कॉम्बिनेशन कला एंड ट्रांसफर कला से का कहे जे फाइल ट्रांसफर कहे से जेंते कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर देन 7 question देखो the primary function of the disk is to be set up to hardware and load and start in operating system. ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहाँ दीजिए मेमोरी बी रे दीजिए बायस सी रे दीजिए सीपीयू एंड डी रे दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम देन देखो क्या बोलते क्वेश्चन आर्थर बुझी दियो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर देखो क्वेश्चन सहित लगे पड़े जाते द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द BIOS is the set of the hardware and load and start of the operating system. Then sang mane question number 8 jama what kind of memory is both starting and non-volatile what kind of memory is both starting and non-volatile option number A देखो ROM B दीजिए RAM C दीजिए cache and D दीजिए BIOS option number A is the right answer ROM. Then question number 9 देखो DAS is computer software designed to operate the computer hardware and provide platform for running application software काना देखो ऑप्शन नंबर कहाँ दीजिए ए रे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बी रे दीजिए सॉफ्टवेयर सी रे दीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी रे दीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सो देखो हमर केनटा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर काना देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर टा गोटे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जेंटा कि डिजाइन टू द ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो द डेस इज द अमाउंट ऑफ द डाटा that a storage device can move from the storage medium to the computer per second. तो फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दीजिए डाटा एक्सेस रेट एंड बी रे दीजिए डाटा माइग्रेशन रेट एंड सी रे दीजिए डाटा डिजिटाइजिंग रेट एंड डी रे दीजिए डाटा ट्रांसफर रेट सो सांग मैंने कहाँ कहे पूरा क्लियरली बुझ बहुत इजी क्वेश्चन टा देखो इजी क्वेश्चन टा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन टा देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जेंटा कि डाटा ट्रांसफर रेट सो आर्थर क्वेश्चन टा देन देखो सांग मैंने द data transfer rate is the amount of the data that a storage device can move from the storage medium to the computer per second. Then देखो next question के जिमा question number 11 what is the other name of the programming chips गोटे programming chip रो other name टा काना LSIC B रे दीचे RAM C रे दीचे PROM D रे दीचे ROM. So हमारे another name टा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जेंटा कि LSIC. Then the question number 12
Online real-time system becomes popular in this generation जेनटा कि देख आमर ऑनलाइन रियल टाइम रे सिस्टम बिकम पॉपुलर जेन आम ऑनलाइन थ्रो जिन काम करें सेटा केन जेनेरेशन रो तो फास्ट अपन दे सेकंड जेनेरेशन बी रे दे थर्ड जेनेरेशन एंड सी रे दे फर्स्ट जेनेरेशन एंड डी रे दे फोर्थ जेनेरेशन सो ऑप्शन नंबर बी हो आमर राइट आंसर जेनटा कि आमर थर्ड जेनेरेशन जो ऑनलाइन थ्रोटा यूज से देन देखो 13 नंबर क्वेश्चन है डेस इज द ability of the device of the jump directly to the requested data तो देखो dash is the ability of the device to jump directly to the requested data फर्स्ट ऑप्शन कहाँ दीजिए ऑप्शन नंबर ए sequential access बी रे दीजिए क्विक एक्सेस then C रे दीजिए random access and D रे दीजिए all of the above हम ऑप्शन नंबर C is the right answer जेनटा कि random access रे हमर jump है directly requested data then देखो ऑप्शन नंबर 13 कहाँ दीजिए dash is the ability of the device to jump so सांग मैंने एका क्वेश्चन देखो आर तारे रिव्यू नहीं करबा देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो dash provide the process and memory management service that allow to the more tasks and jobs or programs to run simultaneously जेनटा कि होचे हमर ऑप्शन नंबर ए दीजिए मल्टी कंप्यूटिंग बी दीजिए मल्टी थ्रेडिंग एंड सी दीजिए मल्टी प्रोसेसिंग एंड डी दीजिए मल्टीटास्किंग तो देखो संग माने ऑप्शन नंबर डी होचे हमर राइट आंसर जेनटा कि मल्टीटास्किंग तो आर थरे पढ़ देचे multitasking provides process and memory management services that allows two or more tasks jobs or programs to run simultaneously then देखो माने क्वेश्चन नंबर 15 देखो the tasks of the performing operation like arithmetic and logical operation is called काना प्रोसेसिंग फास्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग जेनटा कि हमर राइट आंसर आइ ई तीनटा शॉर्टकिंग की स्टोरिंग एडिटिंग एटा किछि ना होय देखो पूरा इजी क्वेश्चन था प्रोसेसिंग रो डेफिनेशन ता देजे द टास्क ऑफ द परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग देन देखो 16 नंबर क्वेश्चन दा ALU एंड कंट्रोल यूनिट jointly known as का बोला ALU एंड कंट्रोल यूनिट jointly known as dash ROM CPU RAM PC jointly known as it B is the right answer जेनटा कि CPU आंसर टा हमर हैला ALU and control unit jointly known as CPU then 17 number question देखो RAM is an example of dash हमर RAM टा केन एग्जांपल है सी देखो ता फर्स्ट ऑप्शन दे मेन कंप्यूटर बी रे दे सेकेंडरी मेमोरी एंड सी रे दे प्राइमरी मेमोरी एंड डी रे दे बोथ 1 and 2 हमर आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर जेनटा कि होचे हमर प्राइमरी मेमोरी देन क्वेश्चन नंबर 18 देखो मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ हमर मैग्नेटिक डिस्क ता जेनते केन एग्जांपल कहै केन मेमोरी रो एग्जांपल देखो हम फर्स्ट ऑप्शन रे देजे प्राइमरी मेमोरी बी रे देजे मेन मेमोरी सी रे देजे बोथ 1 and 2 एंड डी रे देजे सेकेंडरी मेमोरी हमर डी इज द राइट आंसर जेनटा कि होचे सेकेंडरी मेमोरी हमर मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी देन क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज ए भितरु हमर केनटा गुटे कंप्यूटर लैंग्वेज ता नुहे जेनटा कि देखो एमएक्स एक्सेल एंड बी रे दे सी रे दे कोबल COBOL एंड देखो डी दे BASI बेसिक्स हमर देखो which one of the following is not a computer language जेनटा कि होचे हमर कंप्यूटर लैंग्वेज ता नुहे सेटा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जेनटा कि होचे एमएक्स एक्सेल The question number 20 देखो RAM is also called as dash reads and write memory इटा तो समस्त इजीटा जानचो और का पढ़बी read and write is the RAM also called तार फुल फॉर्म टा कह देजे सो सांग बने आज लगी कि आरो क्लास आर केतरा क्वेश्चन निकासबी